Hello, am I audible? So I would like to welcome Pratap sir to Pratap sir, please welcome our guests. Good morning, students. Good morning. I hope आप सबने अपना breakfast करे. You are a bit more energetic. Okay, good morning, ma'am. Good Good morning, morning, ma'am. everyone. Good morning. So you all are enjoying the weather जो इस time पे है. Yes, ma'am. Yes, sir. Great. And I hope कि अच्छे weather के साथ we can actually start this whole session with a positive note and with more motivation. ये session जो आज हमारा है आप सब लोगों ने आई बिलीव IBM स्किल्स बिल्ड के जो पहले के जो 2 सेशंस हमने करे थे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों उसमें आप सब लोगों ने पार्ट लिया था उसी के ही कंटिन्यूएशन में आज का हमारा ये सेशन है व्हिच इज ऑन जॉब रेडीनेस एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट द ओरिएंटेशन एक छोटा सा एक वॉक थ्रू रहेगा आपके स्किल्स बिल्ड के ऊपर भी कि जो स्टूडेंट्स पहले के 2 सेशंस में अवेलेबल नहीं हो पाए थे उनमें से अगर कोई स्टूडेंट है तो वो हमारे आज के सेशन में जो एक वॉक थ्रू रहेगा IBM स्किल्स बिल्ड के उसको उस पे परफॉर्म कर सके ओके किसी को कोई डाउट है No, स्टूडेंट्स I have आप not. थैंक यू स्टूडेंट्स आप लोग के पास चैट बॉक्स अवेलेबल है मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि प्लीज जब मैं या रोहित सर जब भी आप लोगों से बात कर रहे हो प्लीज आप तब अपने आप को अनम्यूट ना करें आपका कोई क्वेश्चन रहेगा जब हम आपसे पूछेंगे तो आप प्लीज उसका जरूर बताइएगा एल्स आपके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन रहेगा आप चैट बॉक्स में आपकी कोई क्वेरीज है कोई डाउट्स है आप कुछ बोलना चाहते हैं आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज उधर मैसेज कर सकते हैं ओके Okay, ma'am. सो मेरे को ज्यादातर ओके यस चैट बॉक्स पे दिखना चाहिए आई वांट टू सी कि सब लोग उठे हुए हैं अगर अभी हमारे पास 61 पार्टिसिपेंट्स है रियली होप दैट ऑल 61 आर अवेक सब उठे हुए हैं ओके अच्छा स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि आप कैसे चाहते हो कि मैं सेशन किस तरीके से लूं यू वांट इट टू बी प्योर इंग्लिश और यू वांट इट टू बी अ मिक्स ऑफ इंग्लिश और हिंदी मतलब इंग्लिश हिंदी का मिक्स रहे या English. English, इंग्लिश ma'am. Yeah. ओके okay sure is it for everyone okay some are saying mix okay I'll try both English Hindi ka mix okay राजन I hope मेरी voice सबको audible है is it Yes, ma'am. राजन आप एक बार प्लीज अपना माइक करके देख लीजिए वॉल्यूम बढ़ा के इंक्रीज करके देख लीजिए ओके सो विल बी स्टार्टिंग विद आवर सेशन हमारे साथ इस टाइम पे प्रेजेंट है मिस्टर रोहित रोहित सर CSR बॉक्स में ही हमारे टीममेट हैं विबोधा के लीग एंड आज हम दोनों मिलकर आप लोगों का ये पूरा सेशन ऑन जॉब रेडीनेस एंड ऑन ओरिएंटेशन वर्क थ्रू वो आपके साथ कंडक्ट करेंगे मेरा नाम राशिका है मैं आपके साथ जॉब रेडीनेस का पार्ट लूंगी एंड रोहित सर आप लोग के साथ IBM स्किल्स बिल्ड का वॉक थ्रू करेंगे ओके मैं आप लोग के साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ प्लीज आप एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि आप लोग को मेरा स्क्रीन विजिबल है या नहीं
I hope मेरा screen आप सब लोग को visible है. Yes, screen is all visible. Visible? Okay. Yeah, ma'am. Okay. Thank you so much, everyone. Just a second. Right. So, continuing to IBM Skills Build, I would actually like to know कि किस को पता है कि IBM Skills Build क्या है? Are you all aware about IBM Skills Build? Yes, ma'am. Okay. आप सब लोग को मेरे को बहुत कम yes मिल रहे हैं. I would ये question मेरा सब लोगों से है. I would actually like to ask you that are you all aware about IBM Skills Build? Okay, we have Rohit. No. Fine. ठीक है. We'll start with a bit introduction of IBM Skills Build so that everyone are on the same page. Okay. Okay. So before starting about it, I would actually like to talk to you about, an introduction of IBM. So IBM Skills Builder is actually a digital learning platform. जो आप सब लोगों के लिए, जो हमारे यूथ है, जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स है, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल लर्निंग सेल्फ पेस्ड मॉडल है. फाइन. जहाँ पे आपके लिए नियरली 7500 कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, जो कि सारे के सारे जो कोर्सेज, व्हाट ऑल कोर्सेज वी हैव इन द platform, they all are free of cost for you all students. They all are certified courses. Once you complete a course, you get a certificate. But before getting a certificate, you actually have to answer a few questions and answer to gain that certificate. Just in the manner you are studying, if you want a degree, आपको अपना exams देना पड़ता है, and then only after passing those exams you get your degree. In the same manner, if you want to gain a certificate in the platform, you have to answer some question and answers, and then you can gain the certificate. And you don't have to worry about how many question answers are there, or if you're unable to answer those questions, you won't get a certificate. You don't actually have to worry about it. If you are unable to answer all the questions, you can again go back to the course, can again learn it, and can come back and answer those questions and answer, and can gain the certificate. Okay. Those certificates, you can actually post them on your LinkedIn profile. You can post them on your resume. This will actually help you to, get better opportunities for your internships and your placements. And not forgetting that all these courses are actually there to help you to increase your knowledge. To आप लोग का वो knowledge बढ़ाने के लिए है. हम कोई भी पढ़ाई करते हैं that in the other ways आपका knowledge और आपका skills को improve करने के लिए है. Okay, anyone has any doubt? And IBM Skills Builder का और अच्छे से introduction आपको रोहित सर आगे का presentation में देंगे, आगे का session में. किसी को कोई doubt यहाँ तक? Okay, I assume that किसी को कोई doubt नहीं है. Okay, so moving forward. Okay, so if I ask you all, हम लोग यहाँ पे job readiness का बात कर रहे हैं. Job readiness workshop may we are actually going to talk about two parts. One is resume, fine, and the second is actually how do you have to present yourself in an interview. ठीक है? राजन, आपको जो कोर्स लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा. Okay? Right. So we were talking about resume and your interview. Coming back to resume. I would actually like to understand from you all, what do you understand by resume? Resume क्या होता है? आप जो word होता है resume, आप resume से क्या समझते हैं? Okay, ma'am, biodata. Okay. Biodata. Any more? Anyone has any other thing to say? Self-advertisement, skill set, short description. Okay.
So I tell you one thing. So हम 3 terms सुनते हैं. It's like, okay, people are saying it's very good. I tell you one thing. 3 चीजें होती हैं और तीनों चीजें अलग है. Resume, biodata and CV. ये तीनों चीजें आपकी अलग अलग होती हैं. ठीक है. Resume, जो हम बात कर रहे थे, resume क्या होता है? Okay, एक मिनट. Okay, so when we talk about resume, that what is a resume? Resume is actually a French word which means summary. Okay. Now, if I talk about summary, right? Just people are talking about summary of self-intro, qualification, achievements in short. When I talk about resume, it is a French word which means summary. And if I talk about what summary, as people are writing over here, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर हम यहाँ बात करते हैं समरी की, तो क्या समरी वो मतलब करता है? क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, राइट. बट अगर कोई और इसको भी आंसर करना चाहेगा तो एनीवन? SWOT. ओके. अच्छा ठीक है. इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू लुक इन फॉर इन अ रिज्यूमे, आप एक रिज्यूमे के अंदर क्या देखते हो? Telling someone about your achievements, etc. Okay. Short description about yourself. Okay. But what do you look in? आप अपनी रिज्यूमे के अंदर क्या देखते हैं? Personal education, professional qualification and experience. Very good, Nikhil. That's a very good answer. Soft and hard skills. Very good. Skills. Very nice. Everything like your Instagram. No. Trade skills. Okay. So when we talk about what a person looks in for a resume, we talk about education, आपके skills, आपके interest, और आपका employment, अगर कोई पहला experience रहा हो तो. जब हम लोग बात कर रहे हैं resume की, तो अगर आपका experience किसी job में ना रहा हो, अगर आप पहली बार अगर आप अपने job के लिए apply कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे experience में हमारे internship experience के बारे में लिख सकते हैं. Okay? Area of interest in any job, right? ठीक है. अगर अब मैं आपसे पूछूं, I mean, I hope कि आप लोग समझ गए हैं that resume क्या है, वो एक summary होता है. ठीक है. CV की अगर हम बात करें, CV is one, एक मिनट, चलो हम लोग पहले इस बारे में बात करते हैं, मैं आपको CV और बायोडाटा बताती हूँ. Okay, so अगर मैं बोलूं, अभी हमने resume के बारे में इतना बात करा, जहां हमने बात करी कि education skills, interest, आपके एक्सपीरियंस को लेकर अगर हम बात करते हैं, क्या लगता है आपको कि एक जो रेज्यूमे रहता है वो कितने पेजेस का होता है? आपका रेज्यूमे कितने पेजेस का होना चाहिए? 1 to 2, 1-2 pages. Okay, 1 to 2, 1. That is very good. I'm really happy कि without experience 1 page. Very good. That is a very nice answer. Okay, so that is exactly correct. Usually of 1 to 2 pages. Okay. आपका रिज्यूमे जो रहता है वो 1 to 2 पेजेस का रहता है. ठीक है. अगर हम बात करते हैं सीवी की, ठीक है, सो सीवी जो आपका रहता है दैट इज बियॉन्ड 2 पेजेस. ठीक है. सीवी आपका तब आता है जब आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है एंड उसमें आप अपने जो सारे एक्सपीरियंस होते हैं उनको आप अगर एक डिटेल मैनर में लिखें. ओके. बायोडेटा इज समथिंग जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को ज्यादा कैटर करता है, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेज्यूमे, जहां आपकी समरी आती है जो सिर्फ 1 to 2 पेजेस का रहता है, सीवी जो आपका बियॉन्ड 1 to 2 पेजेस का रहता है, जिसमें आपके एक्सपीरियंसेस का डिटेल रहता है, जो कि आपको आफ्टर फॉर एग्जांपल आपको 10 इयर्स के बाद का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप उसमें शायद मेंशन करें. एंड बायोडेटा इज समथिंग जहां पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आता है ज्यादातर. ओके. आई होप यू ऑल आर अवेयर. आपको थोड़ा समझ आ गया है रेज्यूमे, सीवी एंड बायोडेटा के डिफरेंस के बीच में. एवरीवन, यस, नो, एनीथिंग? ओके, great. Moving forward. Ashish, your resume cannot be of 2 to 3 pages.
your resume has to be of 1 page. अभी आप लोगों ने अपना करियर स्टार्ट करा है, so वो सिर्फ 1 पेज का ही हो तो ज्यादा बेटर है. Okay. Okay. Now coming down to steps to building of a resume. ठीक है. अगर मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करने से पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक आप कितना टाइम लगाएंगे टू बिल्ड अ रिज्यूमे? हाउ मच टाइम आर यू एक्चुअली गोइंग टू स्पेंड टू मेक योर रिज्यूमे? आप अपना रिज्यूमे बनाने में कितना टाइम लगाते हैं? कितना टाइम लगता है अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ? यू कैन यूज योर चैट बॉक्स टू आंसर दिस. 5 minutes. Okay. No time limit. Okay. Anyone? Analysis take time. Okay, fine. 30 minutes. 4 to 5 hours. Graduation 1 to 2 hours. No time restricted. Okay. So अगर मैं आप लोगों से जैसे आप सब लोगों ने आंसर दिए हैं, if I just assume those, so you are saying that it will take nearly a day, not more than that. What I am actually able to assume from all your answers is, अगर मैं आप में से किसी से पूछूं या किसी से बोलूं, आप अपने बारे में क्या समझते हैं या आप अपने बारे में क्या जानते हैं, हाउ मच टाइम डू यू थिंक कि आप उसको किस तरीके से आंसर कर पाएंगे? Okay, if I take a name, Arpit, do we have Arpit? Arpit, can you please unmute yourself? Okay, no response. Arpit is sleeping. Avni? Yes, ma'am. Okay, Avni, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं that tell me something about yourself. I like to read books and Okay. my interest in designing. Okay. This much like my hobbies and what I am pursuing. Okay. So अगर आप अपने रिज्यूमे में लिख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको लगता है कि जो डिटेल्स आपने बोली that would actually be okay to write on a resume? No, ma'am. Right? Okay. So this is something I just wanted to make you all understand that जब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, take some time and understand about yourself. Understand what you want to do, what you really like to do, what is there that you are interested in. आपका अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इज समथिंग जो ये बताता है कि आप अपने बारे में क्या आपको लगता है प्रोज है, कॉन्स है, क्या आपको लगता है इज गुड, क्या आपको लगता है वुड बी हेल्पफुल, समथिंग दैट इज you want to do in your life. So try and understand yourself. Take some time, take at least half a day, sit calmly, talk, understand your strengths, your weakness. Rightly said, Ankit, your strengths and weakness. Understand your interest areas, understand what you want to do, understand how you want to do it, how you want to achieve your particular goals, what are your goals. Okay, that is where we talk about understanding yourself, because what you understand about yourself is something which is going to highlight in your resume. Okay, then we talk about listening and picking information. So iske liye I'll take you all to the next slide. Just a second, and I'm sorry for my bad voice. Okay, decoding the sections. Okay, आपका जो resume होता है ना, that basically involves 5 things. Okay, your education, your internships, academic research and papers, positions of responsibility, and extracurricular activities. Okay, here अगर मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊं,
तो आपका जैसे पहला पार्ट आ जाता है दैट आपका एजुकेशन क्या रहा है, ओके, जहाँ पे आप अपना डिटेल डालते हैं अबाउट योर कॉलेज, आपने किस स्ट्रीम से पास आउट करा है, आपके क्या सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल रहे हैं, 10th में आपने किस फील्ड से पास करा है, 12th में आपने किस फील्ड से पास करा है, अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट योर एजुकेशन, ओके। सेकंड, क्योंकि आपका एजुकेशन ये बताता है कि आप क्वालिफाइड हैं उस एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए या नहीं, ठीक है, इट्स वन ऑफ द क्राइटेरिया। आप कभी भी देखेंगे तो पर्सन वांट्स, अगर somebody wants a graduate of IT stream, so अगर आपका एजुकेशन में वो चीज होगा तभी आप उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। देन इज योर इंटर्नशिप्स, अगर आप लोगों ने अपना इंटर्नशिप्स करा है, वेरी गुड, बट अगर आपने इंटर्नशिप्स नहीं करा है तो यू कैन लीव दिस ऑप्शन, मतलब यू डोंट हैव टू बेसिकली राइट इट, ठीक है, कि इंटर्नशिप नो, ऐसा कुछ लिखने का जरूरत नहीं रहता है। एजुकेशन के बाद यू कैन जंप ऑन टू योर नेक्स्ट थिंग, ठीक है। इंटर्नशिप्स करा है तो आप प्लीज अपने इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस और आपने इंटर्नशिप में आपने क्या जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाया है उसको प्लीज अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। सो उन चीजों का आप बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू, दैट विल हेल्प अ पर्सन जो रिक्रूट कर रहा है आपको, उनको भी हेल्प होता है टू अंडरस्टैंड what all roles and responsibility you have done, you have participated in, and what all you can do in the coming future, right? Then in academics and research papers, हो सकता है आपके सब्जेक्ट में academics and research papers ना हो, बट बहुत से ऐसे स्ट्रीम्स रहते हैं, बहुत से ऐसे कोर्सेज रहते हैं जिनमें academics and research papers अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिनको हम थीसिस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे हम कहते हैं that you have to write a thesis on a particular topic. That thesis is also one of an important point जो आपके resume में highlight होता है, ठीक है। That basically explain आपको किन किन चीजों में आपने रिसर्च करा है, किन किन चीजों में आपको इंटरेस्ट है, ओके। अगर आपके स्ट्रीम या आपके कोर्स में ये पॉइंट नहीं आता है एकेडमिक रिसर्च, कैन जस्ट लीव दैट पॉइंट। देन इज पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके हिसाब से according to you what are role positions of responsibilities you can actually take when we talked about understanding yourself, this is exactly where we are talking about that positions of responsibility, what responsibilities you have actually आपने अपने academic years में, आपने अपने internship period में, आपने कभी job के period में what all responsibilities आपने निभाया है, what all responsibilities you think you can actually look for, what all responsibilities आपको लगता है कि आप आगे चल के निभा सकते हैं, that is something where we are talking about over here. And then comes about extracurricular activities. This is a very important one, okay, well, everything is important, but this is also very important. At times this happens that we don't highlight our extracurricular activities on our resume, which something is not right. Your extracurricular activities are something which tells about your interest areas, which tells a person that except your job, would you be able to do some extra work if assigned to you, right? Extracurricular activities actually tells about all your strengths, that okay fine, if a person is good in his education, that is very nice, but kya wo person extra responsibilities और extra चीजों में और अपने आप को participate कर सकते हैं या नहीं। Your extracurricular activities actually tell that आप ना अपना education के टाइम पे आपने अपने आप को कितना ज्यादा एक्सपोज करने का ट्राई करा, आपने अपने आप को कितना ज्यादा और एक्सप्लोर करा है। फाइन, किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? Yes, Ashish, you can write about that. You have, आपने कहीं पे coordinate करा है and everything. You can very well write that. अगर आपने अपने schools के टाइम पे, colleges के टाइम पर अगर आपने events में participate करा है या organize करे हैं या coordinations करा है, you can very well write down. That is all what is very important. Okay? किसी और को कोई doubt है यहाँ पे? Yes, no, anything? कृष्ण, हम आप लोगों के साथ रिज्यूमे के आइडिया शेयर कर देंगे, बट आफ्टर द सेशन आफ्टरवर्ड, ओके।
So listening and picking information हम लोगों का highlight हुआ, ठीक है. इसमें what you basically have to do is आपके ये जो education, internship, academic areas जो हम लोगों ने इन 5-6 topics के बारे में बात करी, what you basically have to do is take a paper, write all your information on it, okay, write it all down, and फिर आप उसको arrange करेंगे according to what is required. Fine. Education, okay, this is what I have to write down on my education part. Extracurricular activities, this is what I have to write down on my extracurricular activities. You actually have to arrange all your item basis the information you know, you have actually put on in that particular paper, okay. Then you have to polish it, read it, okay, read it, make it in a more creative manner. Fine. आपको बहुत सारे ना टेम्पलेट्स, आप जब ऑनलाइन सर्च करेंगे आपको बहुत सारे रेज्यूमे के टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं आज के टाइम पे नेट पे. यू कैन वेरी वेल पिक देम अप. आप उनको उस पर्टिकुलर टेम्पलेट के लिए जो आपको लगता है सुटेबल फॉर यू, यू कैन वेरी वेल चूज दैट एंड यू कैन जस्ट पुट देम ऑन योर, यू नो, आप उस तरीके से अपने उसको अरेंज करके उसको और पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है. रीड योर रेज्यूमे अगेन एंड अगेन. फाइन. आप फॉर एग्जाम्पल हम जब कभी भी अपना आंसर देने जाते हैं, ठीक है, कभी भी अगर हम कोई एग्जाम देने गए हैं, वी रोट एन आंसर एंड जब हम वापस आते हैं वी रीड इट अगेन, वी समवेयर फील ओके, यू नो, हम इसको और शायद बेटर तरीके से फिल अप कर सकते थे, इसको और बेटर तरीके से लिख सकते थे. वहां आपको ऑप्शन नहीं रहता है, बट यहाँ आपको ऑप्शन है. सो रीड योर रेज्यूमे. बहुत बार हम बहुत से मिस्टेक्स कर देते हैं, इवन अ स्मॉल मिस्टेक ऑफ अ फोन नंबर, ऑफ अ ईमेल आईडीज. So do make sure that you are actually polishing your resume that well. Then coming down to reviewing. What here we mean about review is you have your friends, you have your seniors, you have your faculty members. Do send your resume to them first. आपको अपना resume पहले उन 3-4 लोगों को देना चाहिए रीड करने के लिए कि टेल मी, आप जब इसको रीड कर रहे हैं, what all mistakes or what are the things which you are actually finding should be here or shouldn't be here. Okay, that is something which helps you. हम अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं, but जब हम किसी और को देते हैं, they can view it on a different perspective, right? Which actually helps you to create, to you know, it helps in reviewing and it helps in polishing your resume in a better way. Take their comments and then edit your resume as a final thing, and then you should actually go ahead and send your resume to the desired roles which you were looking for. Okay, I hope I'm making myself clear. Okay, so summary. Over here we talk about एक 2-line summary, एक 2-line statement हम लोग अपने resume के शायद ऊपर वाले section में डालते हैं. Fine. जहाँ पे we are basically trying to tell a person who we are, okay, who we actually are, what all have been, you know, your experience, आपका क्या एक special वो रहा है. एक छोटा सा एक 2-line का हम एक statement अपने resume के अंदर डालते हैं. This will actually help you, वो 2-line का statement, when you know, when we do that first section about understanding yourself. Okay, then how much experience, training in this area, special achievement or recognition, key skills or knowledge, something about your attitude. These are few points which can actually come up in your those 2 lines of summary. Okay, then coming to the next part, right and wrong. Okay, this is the most important thing which all of us at a certain point do miss out. Okay, आप सब लोग को स्क्रीन विजिबल है, राइट है ना? अब अगर आप मुझे बताएं, अगर इस स्क्रीन पे हम लोगों के फॉन्ट साइज, सारे फॉन्ट साइज यहाँ पे अलग अलग होते हैं इन डिफरेंट स्टाइल. ओके, somewhere I would have been using Times Roman, somewhere I was using Calvary, somewhere I was using Roboto, some other. How do you think that would have looked? आप लोग ये स्क्रीन देख रहे हो, क्या लगता है आपको कि
कैसा लगता अगर मैं अलग अलग फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल्स यूज कर रही होती? थैंक यू ऋषभ कि रॉन्ग की स्पेलिंग गलत है. Fine, we have understood that this is something which we should do. Right, very bad, won't look nice. Okay, right, so this is when we talk about, you know, font size and style. And very good, Rishabh, this is exactly right and wrong. A basic spelling mistakes which we do when we are writing our resume. When we are writing our resume, we don't focus on the font size and font style. That will be odd. Exactly. बहुत odd लगेगा. एक person आपके resume को नहीं देख पाएगा if he is able to see that your resume is having different font styles, different font sizes. आपका वो चीज, you know, it won't look good. It won't look formal. It would actually look very informal and very odd. And don't forget one thing. The way you are representing your resume is the way you are going to represent your work. So अगर आपका ये basic चीज of spelling mistakes, font style, font size, color of what you are writing your resume is all different, it won't actually look nice, and this will actually be in a way that this is exactly how you're going to present your work. Fine. Line spacing. अभी आप देखोगे यहाँ पे equal line spacing है. हम लोग जब हमारे इंग्लिश और हिंदी में कुछ लिखा करते थे, when we had those lines, notebooks जो हमारे पास अभी भी रहते हैं, it doesn't happen that you're writing your first word on your first line and the second word 4 lines के बाद, right? It all happens in a better manner. So do make sure that you are writing it in a better way. Okay? Then date formatting, आपके contact details. स्पेलिंग मिस्टेक हम लोग बहुत बार ये गलती करते हैं कि हम हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो होते हैं, से वर्ड, योर ईमेल आईडीज, योर फोन नंबर, हम लोग वो गलत कर देते हैं, राइट? नाउ जस्ट इमेजिन वन थिंग, इफ यू आर सिलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब रोल, बट आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स गलत दिया था, हाउ डू यू थिंक अ पर्सन इज एक्चुअली गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू? Right? Till the time we are not mentioning our contact details in a proper manner, how do you think that a person is actually going to contact you? Right? So please do make sure that you are actually writing all your contact details. आपके जो numbers हैं वो आप correct लिख रहे हैं. Even your number on, for example, when we talk about numbers of your percentage, ठीक है, your percentage for that matter. For example, I secured 78.6. I secured 78.6 in my 12th grade, but because decimal is there, so I 78.6 को मैंने 79 कर दिया. I just round off, हम लोगों ने हमारा figure कर दिया, but with that is exactly not correct. Fine, just a 0.4 difference can actually harm your whole perspective which you actually want to set, because at times this happens that वो 0.4 का ही difference क्यों ना हो, but that 0.4 का difference actually shows a person that you are not trustworthy to the work. You're not trustworthy to your 0.4 percentage. That means you might be trustworthy to your work as well. So make sure that you're writing all the numbers correct. Spelling and grammar, right, wrong. Make sure you are writing it all correct. Your spelling should be correct. Your grammar should be correct. There is this one app which is called Grammarly. Okay. आप लोग को बहुत easily Google पे मिल जाएगा. It is a free platform. It is a free platform. So आप अपना जो भी आपने लिखा है, ठीक है, you take it, you paste it in the Grammarly वाला software जो आपको free में मिल रहा है. You paste it over there. वो आपके almost all 70 to 80% आपका grammar सही कर देता है. वो आपके spellings को सही कर देता है. Trust me when I say that use Grammarly. We too, being professionals, हम लोग भी आज के time पे Grammarly को use करते हैं because it is that good software. It actually helps you to correct your spelling and your grammar. बहुत बार ऐसा होता है. It happens a lot of times कि
is art में हम mistake कर देते हैं, has have में हम लोग mistake कर देते हैं. We all are growing up, we all are learning. तो कहीं ना कहीं हम वो mistakes कर देते हैं. That Grammarly actually helps you to, you know, to correct all those mistakes. Okay. ट्राई करिए कि आपके रिज्यूमे में ज्यादा वाइट स्पेस ना हो. किसी भी जगह पे अगर बहुत ज्यादा वाइट स्पेस हो तो वो चीज थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है. ट्राई फिलिंग आउट योर रिज्यूमे विथ मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन. Also, please do make sure that you don't use I. Okay, don't use I completed this particular course, I achieved second position, I achieved this. Don't use that much of I. If you want to write that I have completed a particular course, you can just simply write completed bachelor's in information from Guru Jambheshwar University on, from this to this year. So you can just write it in that manner. You basically don't have to, put I before every, before starting every sentence. Don't use I. This is a key. Just don't use I. Okay. So somebody had a question. Okay, Ankit, is Arial and New Times Roman font style good for resume? Yes, actually that is actually good. Try using Arial and New Times Roman. They can actually be very good. They are actually, count as formal fonts. So please do use that. Also, if I come to font size, your font style should remain as Arial and New Times Roman, and font size should remain between 11 to 12. Okay, so do make sure you are using Arial, New Times Roman as your font styles, and 11 or 12 as your font size. Use 12 font size for heading for that matter, and 11 as, you can use it for your body matter. Nowadays Google keyboard has autocorrect. Yes, it has autocorrect, but it will only autocorrect, it won't actually help you, framing your sentence. Grammarly at times do that. So you can actually use Grammarly. I would actually recommend you all using Grammarly. Okay. Going forward. Okay. So this was actually about resume. Has किसी को कोई problem है resume में understand करने के लिए? Can we use bold and italic? Rahul, you can, अगर आप अपना कोई heading डाल रहे हैं, you can very well go ahead with bolding it. But अगर आप body लिख रहे हैं तो please उसको bold मत करेगा. Italic, you can use it अगर आपको किसी एक चीज particular चीज को highlight करना है. You want to be a bit more creative for that, so yeah, you can do that. But try not putting all things in italic and using all bold. Yes. Anyone has any other questions? If when we are talking about resume, then we will go on to our interview part. Anyone? Any question? Students? No, ma'am. Okay. Okay, that's great. Name. Ankit, what do you mean by name? Name can be bold. Yeah, name can be bold. Yes, your name can be bold. That is all fine because that is something you're trying to highlight. So yes, your name can be bold. If you're highlighting, if you're adding any headings, that can be bold. You just have to see how your whole resume looks like. And also, students, why we tell you all that keep your resume more focused to what you actually want to explain to your recruiter is because any recruiter, for example, when you're applying for a job, don't think that only you are the one who is applying for the job. There are thousands and lakhs of applications which a recruiter would actually be getting for that particular role he has, he's looking for. And when we talk about someone spending a time in your resume, they won't actually spend more than a minute
They won't actually be spending more than a minute in looking for your resume. So please make sure that all the information here which you are trying to put is correct, is focused to what you want, and is focused to the job role which you are applying. Okay, 30 minutes is what actually takes for you, to आपका resume select होता है या reject. It will all depend on that 30 seconds. So make sure, and as I always say that resume abhi ke time pe, when we all are doing work from home and all, it is your first expression, your first experience to anyone. So make sure that you're putting it all correct. Fine. Okay, so now we will actually be going ahead with our what we say, interview part. Okay, conversation and not question answer. Make sure. So imagine that you have actually been selected for your interview and now you're actually moving forward. What all do you think you're going to have on your interview? Make sure, if me has no experience, does it affect? See, if you're it won't actually affect if you think, but well, it will actually, Krishan, at one point. Make sure abhi aap fresher ki job ke liye apply karoge, to you can actually look for freshers job, right? Conversation and not question answer. Coming to the interview part, always make sure that when a person is actually talking to you, it is coming out to be a conversation and not a question and answer. If the recruiter is only asking you a question and you are just answering him, that won't actually be interested and it won't actually reflect in a good manner, right? When somebody asks you, tell me about yourself, try telling it more like a story. Fine. Tell that person about the interesting things about yourself, your hobbies, achievements, for that example, things which you believe are interesting about yourself can actually be good for a person to listen. Tell it more like a story and not just say, for example, if somebody asks me, tell me about yourself, and I just say that hi, my name is Rashika, and I am from Delhi, and I have 4 years experience. So if I'm saying something like this, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला, for example, this won't actually interest a recruiter to actually even to listen to me. Okay. But वही अगर मैं अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे कर रही हूँ, hi, my name is Rashika, I reside in Delhi, have 4 years experience in the development sector, I have been keen in learning about development sector and corporate social responsibilities. So this basically shows the tone which you are actually saying, in the manner you are actually saying, basically helps a recruiter to be more interested on what you are saying. Tell it more like a story, tell the interesting points which you have. Okay. Then why did you choose this course? Okay. Why did you choose this course? Anyone wants to answer? For example, you are a computer science student, or you're a commerce student, or you're an MBA student. Why did you choose this course? If I ask you. Logical? Sorry. Rishabh, I'm going to answer your question later on. Passionate to learn the subject because of interest. Exactly. So when somebody is asking you why did you choose this course, you actually have to give the reason, the basic reason that why were you actually interested in that particular role. Okay, why were you interested in this particular
course. For example, if I say that I have complete, अगर मैंने अपना Masters of Social Work complete करा है, if somebody asks me that why have you particular completed that course or why did you choose this course, I'm simply going to say in a way that because I'm passionate about the development sector, I'm passionate about working for the people, I'm passionate about working for the people on ground. I'm interested in working on ground, and that is the reason I've chosen Masters in Social Work, where I'm able to understand that how the development sector fully works when we talk about corporate social responsibilities, when we talk about NGOs, when we talk about charities and trusts. This is what is my interest lies, and that is why I've chosen this to improve my learning, to improve my experience, and all. So you basically have to put all those information. And if somebody asks you that, okay, you have talked about yourself, you have talked about your interest areas, tell me that why do you want to work with us? Imagine I am your recruiter and I'm asking you, why do you want to work with me? Why do you want to work with my company? Why do you want to work with us? Tell me, आप लोग का आंसर क्या रहेगा? If I'm asking you कि आप मेरे कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हो और क्या रोल आपको लगता है? So if somebody can actually answer that. Why do you want to work with us? अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्यों मेरे कंपनी में जॉब करना चाहते हो, अगर मैं आपसे पूछता आप मेरा कंपनी में क्यों जॉब करना चाहते हो, तो आप क्या आंसर करोगे? For getting experience and money. Christian, never say that. Never include money. It will improve myself. I am pretty confident I am the best candidate for this job role. Okay, Gaurav, fine. I'm a good learner and leader. Okay, for personal growth and development of company. Okay, so I tell you one thing. अगर आप किसी के घर जाते हैं, ठीक है, और अगर आपके या आपने किसी दोस्त से मिलते हैं, अगर आपका दोस्त आपसे पूछे कि तू why do you spend so much time with me, आप उनको क्या बोलते हो? जब कभी भी आप किसी के घर जाते हो या आपको दोस्त आपसे पूछे that why you spend so much time with me, आप उनको आंसर देते हैं जो उनको खुश करे, राइट? जो उनको करे that मुझे आपका कंपनी इसलिए अच्छा लगता है, you are a good friend, you listen to me and all, right? This is exactly what a company really wants to hear from you at certain level. They want you to be real, but along with that, they want you to know कि आप उस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, आपने उस कंपनी के बारे में रिसर्च करा है या नहीं. So this is actually a very key point. Always make sure कि आप जिस भी कंपनी में अपना जॉब रोल के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, you have searched about that particular company. और अगर मैं आपसे पूछूं that why do you want to join my company, आप इसको इस तरीके से अच्छे से बोल सकते हैं that आपका कंपनी ने पिछले इतने सालों में इतना अच्छा ग्रोथ करा है एंड आपकी कंपनी का डेवलपमेंट सेक्टर काफी अच्छा जा रहा है, जो मुझे लगता है कि मेरे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, मेरे लर्निंग के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और एक बहुत अच्छा लर्निंग रहेगा. एंड ऑल्सो मेरे ग्रेजुएशन, मेरे इंटरेस्ट एरिया से ये बहुत ज्यादा लाई करता है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई विल एक्चुअली बी अ गुड कैंडिडेट, keeping in mind the interest of your role and keeping in mind my interest for a particular subject. Why not to consider money? Why not to always consider money, but never say it on a recruiter face that you are only applying for this role over money. This is not a correct approach. जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, जब हम बात करते हैं लर्निंग की, which simply defines that you are actually talking about your personal and your professional growth. आप एक मनी का बात करेंगे, अगर आप involve money directly, that won't actually suffice the whole subject. Yes, they will think that you're only here for money and not for the company and for the role. If you're directly talking about money, this actually gives a very, very negative impression to your recruiter. Okay? Okay, so moving forward, reasons कि आप किस वजह से रिजेक्ट हो सकते हैं अपने इंटरव्यू में, राइट, is
lack of confidence. For example, अभी मैं अगर आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो I am trying to make my point very clear to you people. Okay, I am trying to answer you all in a better way. I'm trying to put my voice in the front that you all listen to me. Similar way, अगर आपसे कोई पूछे ना, tell me your name, tell me something about yourself, and I go in a way like, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया था, my name is Rashika, I live in Delhi. I have completed this particular course from this university. So you understand my voice over here. जैसे मैंने अभी आपको बोला, a low voice, and I'm using a lot of in between. Okay, there is a lot of gap when I'm saying the confidence which I was actually showing. This is something which becomes a negative impression of your entire interview. आपको अपने interview के time पे you have to be confident enough when you're saying your why, when you're saying your name, your address, anything about yourself. You have to have a confidence in you. You can't take a break. तो आप जितना ज्यादा break लेते हैं, उतना ज्यादा वो आपका confidence दिखाता है कि आप बहुत सोच कर चीजों को बोल रहे हैं. सैलरी वाले पार्ट में स्टूडेंट्स मैं भी आप लोग के पास आती हूँ, ठीक है. I'll talk about salary in a bit. First, let's complete this section, okay? And not making eye contact. Always make sure that whenever you are talking to someone, make eye contact. Don't look down, don't look up, don't look on sideways. Always and always try to make eye contact whenever you are trying to actually talk to someone, especially when you are interviewing. आपका eye contact show करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंस है आप अपनी चीजों को लेके. अगर आप इधर उधर देखेंगे, अगर आप अपना सर नीचे करेंगे या बहुत ज्यादा गैप लेंगे टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर वर्ड, कि आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है, which actually is not right. To help you in this point, what I would actually say you can do is, जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, मिरर के सामने जाइए और मिरर के सामने अपने आप को रिपीट करिए आप जो बोलना चाहते हैं, ठीक है. Look into the mirror, look into the eye and try speaking आप जो भी चीजें बोलना चाहिए. It is basically an exercise जो आपका voice को help करता है whenever आप किसी इंटरव्यू उसके लिए जा रहे हैं, ठीक है. This will actually help you. Whenever you are going for an interview, please try to do this. This will actually really help you. आपका एप्लीकेशन इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिस चीज के बारे में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है. लैक ऑफ कर्टेसी, मैच्योरिटी. अगर आप किधर जा रहे हैं, आपको बोला गया कि आप इस पर्टिकुलर रूम में जाए, if you're not knocking that room, if you're not asking for a permission that sir, ma'am, can I please come in, और आप डायरेक्टली घुस जाते हैं. अगर आपको बोला नहीं गया है बैठने के लिए, आप बैठ जाते हैं चेयर को साइड करके. so all these things, ये आपकी जो इनमेच्योरिटी एक तरीके से होगी, ये एक्चुअली शो करेगा कि आप अपने सीनियर्स को लेके किस तरीके से सीनियर्स को लेके आप कितने ज्यादा आपकी कितनी कर्टेसी है और आप कितने ज्यादा मैच्योर है, आप अपने सीनियर्स को किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं. when you are going in a room, knock it, sir, ma'am, may I come in. till the time आपको बैठने के लिए नहीं बोला जा रहा है, please stand up. once the person say that yeah, please you can sit, then sit. बोलने के लिए जब तक नहीं बोला जा रहा है, don't say. प्लीज डू मेक श्योर कि आप ये छोटा छोटा थैंक यू बोलना. फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया, थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर कनेक्टिंग विथ यू. छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनको हमारे को ध्यान रखना पड़ता है. डू मेक श्योर कि करके रखें हमारे को, बिकॉज वी आर यंग एंड वी हैव लॉट ऑफ ड्रीम्स एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे को बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी चाहिए होती है. Don't portray yourself as a person that you want everything in one go. Till the time you don't have a plan, when we talk about understand yourself, understand your goals, how do you want to go to your goals, that is where exactly these points come from. कि आपका goal है that you want to become a manager, but उसके लिए आप क्या क्या चीजें करेंगे. This is something
you can actually explain in your interview. Okay, too interested in salary or vacation. Here we talk about the money factor. अगर आप अपने सैलरी को लेके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे तो the person will actually assume that you are only here for your salary and not for work. You're not here for learning, you're not here for work, you're not here for your professional goal, but you're only here for the money which you will be getting. That's it. अगर आपसे कोई पूछता है कि कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी भी जॉब प्रोफाइल में जाने से पहले डू मेक श्योर कि आपने एक मार्केट रिसर्च करा है. अगर आप एक वेब डेवलपर का जॉब के लिए जा रहे हैं एंड यू आर अ फ्रेशर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, थोड़ा मार्केट रिसर्च करके जाओ कि कितना बेसिक सैलरी एक वेब डेवलपर को, एक फ्रेशर वेब डेवलपर को इस टाइम पे मिलता है. एंड दैट इज व्हाट यू कैन एक्चुअली पुट दैट. सर आई वुड एक्चुअली रिक्वेस्ट इतना, आई वुड एक्चुअली होप इतना सैलरी हो. फाइन. So Rishabh, I guess your point over here is clear that what if you are going to a job to get experience in that field? So that is actually good, and if you don't put your salary wala part in the front, so that will actually make it very comfortable. मतलब बहुत self-explanatory हो जाता है वो. Vacation, don't start on your interview that sir वो मेरे ना भाई की शादी है 2 महीने बाद, तो मुझे छुट्टियां मिल जाएगी क्या? Don't go ahead with all these questions in your first go. ये सब बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस लेकर आता है. ठीक है, and this basically shows that you are not interested in the job and you are interested in the money, so please do make sure that you don't do that. Poor appearance. अगर आप किसी जॉब रोल के लिए जा रहे हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप रिप्ड जीन्स पहनकर नहीं जा सकते हैं, आप टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते हैं. मेक श्योर that you are dressed neatly and properly. जो वाइब आप अपने आसपास क्रिएट करते हैं, आपका अटायर जो आप इंटरव्यू के लिए पहनकर जा रहे हैं, वो बेसिकली एक वाइब और एक एक it creates basically a vibe. ठीक है, which it portrays how you actually are going to work basically. If you are going in a casual dress, in a casual attire, this simply means that you are actually going to take your work very casually. But if you are dressed formally, if you are dressed neatly, this simply means that you're also going to focus on your work. You are that focused on the work you are looking for. Fine. So make sure कि आप neatly dressed हो. अगर मैं interview ले रही हूँ and अगर कोई ripped jeans या बहुत casually dressed होकर आता है, that is my first experience to it that this person is not correct for the job. Please make sure that you are neatly and formally dressed up. And try explain yourself correctly. Don't use fall languages. Do make sure कि आप अपने language का सही use कर रहे हैं. Don't use words like yaar and all जो हम normal अपने friends के साथ बात करने में use करते हैं. Make sure that your language is formal. Okay. It is necessary that it is always, I would say it is good and it is always recommended that you dress formally for all your interviews. Okay. And yeah, before the interview again, research for the company. A LinkedIn, I hope आप सब लोग के LinkedIn accounts हो. अगर आप लोग के LinkedIn accounts नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग अपने LinkedIn accounts खोलें. आपको जो जॉब आपको लगता है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि कौन आपके इंटरव्यू लेने वाले हैं, आप किससे मिलने वाले हैं, try search for that person. You can actually get a lot of information about that person over LinkedIn. Practice your answers. Again, go on the mirror के सामने जाके खड़े हो, आप अपने please answers का practice करिए. This will actually help. Dress for the job you want, not as a student. If you're not dressing up as a formal person, but you're dressing up as a student, which simply means that you're not out of that whole student vibe and you're still, you're not appropriate for the job role. What if someone is not comfortable in formals? You have to. I will say that you have to be. If you're not comfortable, that is a different thing. But at least make sure that you are dressed properly. अपने interview के time पर.
carry all your paperwork, please, and be on time. Don't be late. Please, please, please be on time. Rather make sure that you are, 10-15 minutes early for your interview time. अगर आपको 1:30 का time दिया गया है for interview, please make sure that you are there by 1:15. Okay, so please be on time. We talk in interview in English language. No, it is not, Nikki. It is not important that आपको English में ही बात करनी है. आप अपने interview start होने से पहले आप उनको easily बोल सकते हैं कि sir, I am really sorry, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम हिंदी में बात करें? I am not that comfortable with English, और मैं चाहूंगा कि मेरा जो interview वो हिंदी में हो, because मुझे ऐसा लगता है that I can express myself better in Hindi and not in English. तो आप उनको बोल सकते हैं. Okay. So, okay, students, moving forward, now we will, okay, sorry, this was actually left. The way you conduct in your interview basically means how you're going to conduct your work. Eye contact, be open and relaxed. जितना आप बोल रहे हैं उतना आप सुनिए. Please make sure कि आप अपने जो आपका recruiter है उनकी बात सुने. Honest रहिए. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है और अगर वो आपके इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट टॉकिंग एनी बैड थिंग अबाउट द कंपनी और अबाउट योर एक्सपीरियंस. यू हैव टू बी अ बिट फॉर्मल ऑन दैट. थैंक द इंटरव्यू. अगर हैंडशेक हो रहा है या स्माइल हो रहा है, मेक श्योर कि आप वो आई कॉन्टैक्ट करें. एक फर्म हैंडशेक करिएगा स्माइल के साथ. डू स्माइल, डोंट टेक अ वेरी लो फेस. So yes, और हमेशा सुनिए पहले कि वो क्या बोलना चाहता है. अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता, you can again ask, but do make sure that you are understanding what the person really wants to listen. Okay, so we will come. This was all about our resume and interview section. I will actually be going forward to the walkthrough of orientation, right? Walkthrough of IBM Skills Build. For which I would actually request Rohit sir, if you could please come in. And I will stop sharing my screen. Rohit sir? Hello. Yeah, am I audible? Yeah, now you're audible. All right. So thank you so much for this wonderful session, Rashika ma'am. So students, we will be covering few more pointers in this meeting, and then we can wrap up this call. All right. I'll take you another 15 minutes. Then आप जा सकते हैं and अपने बाकी काम कर सकते हैं. So before that, let me share my screen. So my screen is visible, right? Yes, sir. Visible. वो मूव कर रही है अभी. सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड ऐसे दिख रहा है? नहीं रोहित, आपका स्क्रीन अटका हुआ है. All right. Just a second. I think now it's moving. Right? हाँ जी. All right. तो स्टूडेंट, जैसे आपने भी सुना कि कैसे आपको इंटरव्यू में हैक्स होते हैं, क्या क्या आपको चीजों का ध्यान रखना होता है, एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कवर टू गेट अ डिजायर्ड जॉब. एंड राशिका मैम हैज ब्रिलियंटली एक्सप्लेन्ड यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स. तो अब हम और भी स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं. उससे पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप गुरु जम्बेश्वर में से पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? एंड आप जब गुरु जम्बेश्वर से पढ़ाई करके निकलेंगे तो आपको क्या मिलेगी? एक डिग्री मिलेगी. दैट डिग्री इज अ टैंजिबल प्रूफ जो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन. सिमिलरली
हम जब भी कोई कोर्स करते हैं IBM स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म पे, तो आपको IBM के थ्रू एक सर्टिफिकेट और बैच मिलता है जो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है दैट इज द टेंजिबल प्रूफ कि आपने सक्सेसफुली कुछ भी लर्निंग एक्टिविटी कंप्लीट करी है। तो आप लोगों ने IBM का नाम सुना है, राइट? एनीवन हु इज नॉट अवेयर ऑफ IBM? स्टूडेंट, व्हाट हैज हैपेंड? राशि के मैम के जाते ही आप लोग एकदम लीस्ट इंटरेक्टिव हो गए। ऑलराइट, तो ग्रेट राहुल, आपने नाम सुना है। तो ग्रेट ऋषभ। सो IBM एक जाइंट ग्लोबल टेक कंपनी है which provides technical solutions all over the world across various technical domains. हम जो ATM machines वगैरह यूज करते हैं that is also were invented by IBM. तो जैसे वाशु को नहीं पता, वाशु को पता है सॉरी, पर किसी को नहीं पता तो आप गूगल कर लेना। एंड रही बात IBM के सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव की, तो IBM ने अपने सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव के अंडर एक प्लेटफॉर्म बनाया है कॉल्ड IBM स्किल्स बिल्ड, जो मैम ने आपको ऑलरेडी समझाया था। तो मैं एक बार क्विकली बेनिफिट्स आपको बताऊंगा प्लेटफॉर्म के, ताकि आपको एक और आइडिया हो पाए। पहला तो यही है कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरा ये है कि आपको इसमें 7,500 कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। एंड उसके बाद आपको एक बार रजिस्टर कर देंगे आप प्लेटफॉर्म पे, तो आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस रहता है। जैसे कि आप अगर गुरु चंद्रेश्वर कॉलेज से पास आउट भी हो जाते हैं तो भी यू विल बी एबल टू लेवरेज द प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, उसके बाद ये है यू कैन एक्सप्लोर पॉसिबल न्यू करियर्स फॉर योरसेल्फ। जैसे कि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं अराउंड डिजिटल मार्केटिंग या फिर क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबिलिटी, या फिर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं अराउंड सोशल मीडिया प्रमोशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हैकिंग या रोबोटिक्स, तो आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है स्टूडेंट्स कि आप डिफरेंट कोर्सेज ट्राई आउट कर सकते हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। एंड देन द इम्पोर्टेंट पार्ट इज यू कैन रिसीव लर्निंग रिकमेंडेशंस। तो जैसे कि आप YouTube पे सब गाने सुनते हैं, राइट? तो YouTube आपको सॉन्ग्स रिकमेंड करता है बेस्ड ऑन योर सॉन्ग प्रेफरेंसेस। सिमिलरली आपको भी प्लेटफॉर्म भी लर्निंग एक्टिविटीज रिकमेंड करता है बेस्ड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप बोलोगे प्लेटफॉर्म की मैं इंटरेस्टेड हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो आपको डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया प्रमोशन, हाउ टू यूज ऑल दी सोशल मीडिया हैंडल्स, तो ये सब रिकमेंड करेगा। अगर आप प्लेटफॉर्म को बताएंगे कि मैं इंटरेस्टेड हूँ बिजनेस करने में, तो वो आपको बिजनेस फंडामेंटल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऐसे कोर्स रिकमेंड करेगा। So similarly, everyone will have a very personalized experience on the platform, and then you can choose the learning that is right for you. 7,500 कोर्सेज में से प्लेटफॉर्म ने आपको बता दिया कि 30-40 कोर्सेज आर रेलेवेंट फॉर यू, तो आप इजीली अपने 2-4 लर्निंग एक्टिविटीज चूज कर सकते हैं जो आपके लिए सही है, एंड यू कैन प्रैक्टिस न्यू स्किल्स। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यू कैन अर्न डिजिटल सर्टिफिकेट एंड बैचेस। जब भी आप कोर्स करते हैं तो आपको IBM सर्टिफिकेट और बैच इशू करता है, जो आप अर्न कर सकते हैं, अपने लिंक्डइन पे अटैच कर सकते हैं और अपनी CV में भी अटैच कर सकते हैं। एंड कभी इंटरव्यू पे ले जा रहे हैं तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के भी ले जा सकते हैं। दैट विल हैव 100% क्रेडिबिलिटी एंड इट हैज ग्लोबल क्रेडिबिलिटी, मतलब वो ऑल ओवर वर्ल्ड माना जाएगा बिकॉज IBM इज द इशूइंग बॉडी एंड IBM एज अ ब्रांड हैज अ ग्रेट रेपुटेशन इन द मार्केट। तो अगर IBM आपको सर्टिफिकेट से बैजेस इशू कर रहा है तो इट विल इमेंसली कंट्रीब्यूट इनटू योर क्वालिटी ऑफ द रिज्यूमेस। एंड द लास्ट पॉइंट इज you can use this platform from mobile devices as well. जरूरी नहीं है कि डेस्कटॉप हो, कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, नॉर्मल मोबाइल स्क्रीन से भी आप यूज कर सकते हो इस डिवाइस को नॉर्मल अपने वेब ब्राउजर्स के थ्रू। तो दिस इज जस्ट अ क्विक बेनिफिट्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेट्स डू अ एक्टिविटी टुगेदर। ऑलराइट, जो आपको दिख रहा है दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू अनुभूति जायसवाल, नौकरी की तैयारी से संबंधित पाठ्यक्रम। ये एक सर्टिफिकेट है जो IBM इशू करता है। इट हैज मेंशन्ड ऑफ IBM, किस डेट को करोगे वो मेंशन होगा, आपका नाम मेंशन होगा, टाइटल ऑफ द कोर्स मेंशन होगा, एंड आपको यूनिक रेफरेंस आईडी मेंशन होगी ताकि IBM कोई सर्टिफिकेट किसी का चुरा ना ले। एंड दिस ऑल विल बी मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट। तो आपको ये कोर्स अभी साइड बाय साइड करना है मेरे साथ, ताकि आप सभी को ये भी सर्टिफिकेट मिल पाए, राइट? तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ एक बार इसका।
तो स्टूडेंट्स मैं आपको जो लिंक भेजा है, इस लिंक को यूज करके आपको ये एक्टिविटी करनी है। So I'll share my screen again. So my screen is moving, Rashika. नहीं, वो अभी अटका हुआ है। All right. तो बेसिकली स्टूडेंट ये सर्टिफिकेट आपको लेना है, मैंने आपको लिंक चैट बॉक्स में डाल दिया। ये है, इट्स एक्टिविटी का टाइटल है क्रिएट अ ग्रेट प्रोफेशनल रिज्यूमे, एंड आप इसका हिंदी वर्जन एक्टिविटी का कर रहे हैं क्योंकि आई फील दैट यू विल बी कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज टू, एंड कोर्सेज इन दी इंग्लिश सारी लैंग्वेजेस में है, सो यू कैन इजीली ट्राई आउट डिफरेंट कोर्सेज ऑन द प्लेटफॉर्म। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी विच इज लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद लिंक्डइन, लॉग इन विद आईबीएम के ऑप्शंस देगी। तो बेसिकली यहाँ पे प्लेटफॉर्म पूछना चाह रहा है आपको लॉग इन किसके थ्रू करना है। हमने आपकी केवल जीमेल आईडीज को ही रजिस्टर किया है, तो आपको लॉग इन विद गूगल पे क्लिक करना है। ऑलराइट, जैसे ही आप लॉग इन विद गूगल पे क्लिक करेंगे, आपकी सारी ईमेल आईडीज का स्क्रीनशॉट सामने आ जाएगा कि आपको कौन सी ईमेल आईडी से लॉग इन करना है। तो जो आपने ईमेल आईडी अपने कॉलेज को सबमिट की थी, वही ईमेल आईडी के थ्रू हमने आपको रजिस्टर किया है। तो आप अपनी वही ईमेल आईडी का चुनाव करेंगे यहाँ पे, और जैसे ही आप उस ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, यू विल बी लैंडेड अपॉन IBM स्किल्स बिल्ड का पेज, जहाँ पे प्लेटफॉर्म आपसे पूछता है योर प्रेफर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको इंटरफेस किस लैंग्वेज में देना है। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। हियर आई विल रिकमेंड कि you should opt for English because English language में interface experience will be better. So here you will opt English. तो उसके बाद पूछेगा यो सेलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, आपने इंग्लिश जैसे ही चूज कर लोगे, उसके बाद नीचे कंटिन्यू का एक बटन आएगा, आपको उसको प्रेस करना है। तो अब जैसे ही कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, आपका प्रोफाइल सेक्शन खुल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये प्लेटफॉर्म आपको लर्निंग एक्टिविटीज रिकमेंड करता है, एंड वो लर्निंग एक्टिविटीज रिकमेंड प्लेटफॉर्म इसके थ्रू करता है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव में इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल में इंटरेस्ट है, डेटा एनालिस्ट में इंटरेस्ट है, डिजाइनर में इंटरेस्ट है। तो दिस इज अबाउट दिस। अभी के लिए आप रैंडमली एक या दो सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये प्रोफाइल आराम से आपको जब भी टाइम हो तो आप इसको अपडेट कर लेना, और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपसे वो आपके नाम की स्पेलिंग पूछवाएगा। आपके नाम की स्पेलिंग अगर सही है, यहाँ पे फुल नेम जैसे मेरा रोहित राजपूत लिखा रहा है विच इज करेक्ट, तो अगर ये नाम की स्पेलिंग गलत है तो मैं इसको एडिट कर दूंगा। अगर ये नाम की स्पेलिंग ठीक है तो मैं डन पे क्लिक कर दूंगा, एंड जैसे ही मैं डन पे क्लिक करूंगा, प्लेटफॉर्म मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू टेक द ट्यूटोरियल फॉर दिस प्लेटफॉर्म। मैं आपको अभी राइट नाउ ट्यूटोरियल ऑलरेडी दे ही रहा हूं, तो आप इसको कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछा जाएगा एक पॉपअप विंडो के थ्रू कि डू यू वांट टू स्किप द ट्यूटोरियल, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन स्किप ट्यूटोरियल। जैसे ही आप स्किप ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे, आपकी एक्टिविटी खुल जाएगी नौकरी की तैयारी से संबंधित पाठ्यक्रम, एंड ये एक्टिविटी को शुरू करने से पहले आपको ऐड टू द क्यू पे डालना है। जैसे आप अपने गानों को प्लेलिस्ट में डालते हैं, जैसे ही आप अपने सॉन्ग वीडियोस को वॉच लिस्ट में डालते हैं, वैसे ही आपको इसको क्यू लिस्ट में डालना है। क्यू लिस्ट में मतलब ये है कि आप इसको बाद में करेंगे, और ये IBM स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म पे आईडीज को एक्टिवेट करना होता है। तो उसके लिए आपको इसको ऐड टू द क्यू पे क्लिक करेंगे, आपको लिखा आएगा एडिंग टू लर्निंग क्यू, उसके बाद आएगा रिमूव फ्रॉम द क्यू। रिमूव फ्रॉम द क्यू का मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी इसको ऐड कर दिया है, इसको रिमूव करने के लिए बटन दबाएं। आपको रिमूव नहीं करना, आपको यही छोड़ देना है। तो यहाँ तक जो जो बच्चों ने स्टेप्स पूरे कर लिए, वो मुझे चैट बॉक्स में बताएगा डन। ऑलराइट, तो ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं, और मैं आपको ये बस क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ। आप जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन का ऑप्शन पूछेगा। आपको लॉगिन विद गूगल पे सिलेक्ट करना है।
लॉग इन विद गूगल के बाद आपको ईमेल आईडीज का सेलेक्ट करना है कि कौन सी रजिस्टर्ड थी आपकी। उसके बाद आपको लैंग्वेज का चूज करना है विच इज इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे चूज करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बाद आपकी प्रोफाइल पूछी जाएगी, रैंडमली एक या दो ऑप्शन सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको अपने नाम की स्पेलिंग को चेक करना है, अगर नाम की स्पेलिंग ठीक है तो डन पे क्लिक कर देना, नहीं ठीक है तो एडिट पे जाके फिर डन पे क्लिक करना। उसके बाद आपसे ट्यूटोरियल का पूछेगा, आपको कैंसिल पे क्लिक करना है, स्किप ट्यूटोरियल पे क्लिक करना है। आपकी एक्टिविटी खुल जाएगी, उसको आपको ऐड टू द क्यू पे क्लिक करके ऐड टू द क्यू में डालना है, मतलब क्यू लिस्ट में डालना है। ऑलराइट, ऑल राइट। अगर किसी का लिखा आ रहा है कि वी कैन नॉट फाइंड यू इन सिस्टम, उसका मतलब ये है कि आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको अपना डिटेल्स चैट बॉक्स में डालनी होंगी। वंशिका, आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करी है? हार्दिक, अम्बे, कीर्ति, अनु, सिमरन, ग्रेट इफ यू हैव डन दिस। वंशिका, एक बार दोबारा लिंक पे क्लिक करके आप ट्राई करो, इट विल वर्क, नॉट एन इशू। ग्रेट आकाश, बाकी सारे स्टूडेंट, आई वांट यू टू ऐड दिस इनटू द क्यू। ऑलराइट, तो जैसे ही मैंने वो लर्निंग एक्टिविटी को खोला तो लॉगिन के ऑप्शंस पे मेरे पास आएंगे। I have to click on login with Google. I have to select the email ID and I am able to log in this platform. Now the question arises कि आप कैसे सर्टिफिकेट ले सकते हैं एंड कैसे आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। जब भी एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, हमेशा गो टू दिस एक्टिविटी या फिर मैनेज एनरोलमेंट स्लैश लॉन्च पे बटन होएगा, उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपकी ऐसे एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट करिए स्क्रॉल करके, जो भी है। आप जैसे इस एक्टिविटी को पूरा देख लेंगे तो नीचे ऑप्शन आता है यस आई हैव चेक्ड इट आउट, आई हैव चेक्ड इट आउट। उसके बाद करियर की सही चुनाव कैसे करें, नेक्स्ट एक्टिविटी है उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी खुल जाएगी। राइट, ये आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको सिमिलरली आई हैव चेक्ड इट आउट ऐसे करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। तो कमिंग बैक टू द एक्टिविटी, अब आपको अगर सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ऊपर 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पे अभी सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपको ये सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा अगर आपने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली होगी, तो उसके बाद आप व्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट जो आएगा उसको डाउनलोड कर लेंगे या फिर पीडीएफ में सेव कर लेंगे या फिर शेयर कर लेंगे किसी भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे। अब इस प्लेटफॉर्म के होम पेज पे आने के लिए ऊपर आईबीएम स्किल्स बिल्ड फॉर जॉब सीकर लिखा आ रहा है। राइट, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज के होम पेज पे आ जाएंगे। राइट, ऐसा होम पेज दिखता है आपका आईबीएम का प्लेटफॉर्म का। अब आप अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो जैसे कि आपको कोई एक्टिविटी करनी है, सर्च में जाइए, आप सर्च में जाके आप कोई भी एक्टिविटी को सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर रिज्यूमे के अराउंड एक्टिविटी करनी है तो मैंने रिज्यूमे लिखा, तो ये सारे कोर्स मुझे बता रहा है कि अराउंड रिज्यूमे डोमेन क्या क्या मैं कर सकता हूँ। तो आप जॉब एप्लीकेशन एसेंशियल, प्रोफेशनल फाउंडेशनल प्रोसेस, जॉब रेडीनेस के चैनल्स, ये सारे हैं। रिज्यूमे एंड लिंक्डइन ट्रेनिंग, हाउ टू राइट अ रिज्यूमे, हाउ टू मेक अ रिज्यूमे, क्रिएट अ ग्रेट प्रोफेशनल रिज्यूमे, व्हाट डज अ गुड रिज्यूमे लुक लाइक, ये सारे आप कोर्सेज कर सकते हैं। वही तरीका है, जो भी कोर्स करना है उस कोर्स को खोलिए, किसी भी एक्टिविटी को शुरू करने के लिए ब्लू बटन पे क्लिक करिए, वो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। आपको जहां पे भी वो लैंड करेगी, कभी यूट्यूब वीडियो पे आपको लेके आएगी, कभी आपको किसी वेब पेज पे लेके आएगी, कभी किसी पीडीएफ पे लेके आएगी, ऐसे आपको कभी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे लेके आएगी। आपको वो एक्टिविटी वहां पे कंप्लीट करनी है।
और जब आप प्लेटफॉर्म पे वापस आएंगे तो प्लेटफॉर्म आपका कंप्लीट दिखा देगा कि आपने एक्टिविटी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। और उसके बाद ये 3 डॉट्स पे जाके आप अपना सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट दिख जाएगा विच इज लाइक दिस। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं, आप जैसा चाहें। आप इसको शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, फिर किसी भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स, प्रेफरेबली लिंक्डइन। एंड सिमिलरली आप अलग अलग एक्टिविटीज इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। नीचे सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च में जाइए, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सस्टेनेबिलिटी, जो भी आपको करने का मन करे आप सर्च करके वो एक्टिविटी कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऑलराइट, उसके बाद आपका नीचे लर्निंग का ऑप्शन आएगा, तो आपकी जो भी लर्निंग एक्टिविटीज के फीचर्स है वो आएंगे। चैनल सब्सक्रिप्शन, जैसे आप यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करते हो वैसे आप डोमेन वाइज चैनल सब्सक्राइब यहाँ भी कर सकते हो। अगर आपने स्पीकिंग स्किल्स या फिर कंप्यूटर स्किल्स का चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो आपके जो जो कोर्सेज उस चैनल के अंदर है वो यहाँ पे दिखाएंगे। योर क्यू, जो भी आप एक्टिविटी आपने अभी क्यू में डाली थी एक्टिविटी, जो भी आप एक्टिविटी क्यू में डालोगे वो यहाँ दिखेंगी। योर लर्निंग असाइनमेंट्स, अगर आपका कोई क्विज रह गया होगा या फिर आपने कोई कोर्स शुरू किया होगा वो उसके अंदर जो इन मॉड्यूल असेसमेंट है वो इनकम्प्लीट है, वो आपके असाइनमेंट्स यहाँ दिखेंगे। योर लर्निंग इन्विटेशंस, इसमें ये भी फीचर है कि आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स आपको इनवाइट कर सकते हैं कि आप ये कोर्स करिए, तो आपके जो भी इन्विटेशंस हैं लर्निंग एक्टिविटी के तो वो आपके यहाँ दिखते हैं। एंड योर कंप्लीशन, जो भी आप कोर्स कंप्लीट करोगे वो यहाँ दिखेगा। तो ये सारे बटन से आप इन पे क्लिक करके जाके अपनी लर्निंग एक्टिविटी चेक कर सकते हो। रिकमेंडेशंस के ऑप्शन में ये है कि आपको जो लर्निंग एक्टिविटीज प्लेटफॉर्म रिकमेंड करता है तो वो आपको यहाँ दिखती है। अगर आप लर्निंग पे क्लिक करोगे तो जितने भी लर्निंग एक्टिविटीज प्लेटफॉर्म मुझे रिकमेंड कर रहा है मेरी प्रोफाइल इंटरेस्ट के हिसाब से वो यहाँ दिखेंगे। जो भी मुझे आईबीएम बैजेस रिकमेंड कर रहा है वो यहाँ दिखेंगे। ये पाथ्स, ये प्रोग्राम्स, ये सब आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लास्ट के 3 डॉट पे क्लिक करके आपका प्रोफाइल का सेक्शन दिख जाएगा जो आप कभी भी बाद में एडिट कर सकते हो, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, और आप वापस होम पेज पे आके अलग अलग फीचर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई डाउट है? दिस इज हाउ होम पेज लुक्स लाइक। एंड एक फीचर और मैं बताना चाहूंगा आपको होम पेज का, विच इज जॉइन द स्किल्स बिल्ड कम्युनिटी। तो आप सब लोग फेसबुक यूज करते हैं, राइट? फेसबुक पे अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वैसे ही आईबीएम ने अपनी एक स्किल्स बिल्ड कम्युनिटी बनाई है जहां पे ये सारे आईबीएम लर्नर्स अपने आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो आप भी इसको यूज कर सकते हो एज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। आईबीएम एम्प्लॉइज के साथ नेटवर्क कर सकते हो, अपने ग्लोबल स्किल्स बिल्ड लर्नर्स का इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको कोई जॉब वैकेंसी है वो यहाँ पोस्ट होती है, अगर कोई नया कोर्स आया है तो वो यहाँ पे पोस्ट होता है, अगर कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन कोई एक्टिविटी करवा रहा है वर्चुअल या ऑफलाइन वो यहाँ पे अपडेट्स पोस्ट होती हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हो फॉर नेटवर्किंग, फॉर गेटिंग द फ्रीक्वेंट अपडेट्स एंड ऑफ कोर्स टू गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता आप यहाँ पे क्वेरीज डालेंगे तो सम रैंडम लर्नर विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको आप नए ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट में, एआई डेटा में, आप ये सारी चीजें ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और आपको डोमेन सेंट्रिक अपडेट्स मिलेंगी। दिस इज हाउ पीपल आर इंटरेक्टिंग, आस्किंग देयर क्वेरीज, नेटवर्किंग, आईबीएम प्रोफेशनल के साथ चैट कर सकते हो। तो दीज आर दी फीचर्स यू कैन यूज फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म। अब यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आया तो बताइए। राहुल इज आस्किंग बैच क्या है? तो राहुल, कोई भी लर्निंग एक्टिविटी आप करते हो वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोई सब्जेक्ट है, आपको उसके ऊपर कोर्स करना है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग का सब्जेक्ट छोटे छोटे 10 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। अगर आप कोई एक मॉड्यूल करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आप सारे मॉड्यूल कंप्लीट कर लोगे तो आपको आईबीएम का बैच मिलेगा। तो ये डिफरेंस है सर्टिफिकेट्स और बैजेस के अंदर। तो आप मान के चलिए कि बैजेस को अर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बैजेस थोड़े एस्पिरेशनल है, और ऑफ कोर्स बैजेस की वैल्यू थोड़ी सर्टिफिकेट से ज्यादा है। ओके, ये समझ आ गया आपको सर्टिफिकेट से बैजेस के बीच में डिफरेंस? तो मान के चलिए अगर आप पूरी बुक कंप्लीट करोगे तो आपको एक बैच मिलेगा, और हर एक चैप्टर उस बुक का कंप्लीट करने पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑप्शंस आपको कोई भी लर्निंग एक्टिविटी के ऊपर 3 डॉट्स आते हैं,
वहां पे शो होता है, आई विल शो यू हाउ। तो जैसे आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है, आपने सर्च में डाला मुझे एक्टिविटी करनी है रिज्यूमे पे, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे करनी है, तो ये सारी लर्निंग एक्टिविटी दिख रही है आपको, डिजिटल मार्केटिंग इन योर वेबसाइट। अगर मेरे को ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, तो इस एक्टिविटी को शुरू करने के लिए आपको नीचे बटन आता है, आपको ऊपर 3 डॉट्स जो दिखेंगे, वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। आई विल शो यू हाउ। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल रिज्यूमे पे किया, तो आपकी स्क्रीन के टॉप में 3 डॉट्स आते हैं, जैसे आपको ये दिख रहे हैं। आप उस पे करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था उस टाइम पे, राइट। ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। ये आपका सर्टिफिकेट ऐसा दिखता है। ऑलराइट, दिस इज हाउ योर सर्टिफिकेट लुक्स लाइक। एनी अदर क्वेरी? एंड प्रियंका एंड आशीष, आपका अगर लिखा रहा है कि वी कैन नॉट फाइंड यू इन सिस्टम, तो आप दोनों अपना नेम और ईमेल आईडी हमें शेयर करिए एंड वी विल गेट यू रजिस्टर्ड। तो आप दीक्षा के साथ शेयर कर सकते हैं एंड दीक्षा विल रीच आउट टू अस एंड आपका ईमेल आईडी आपके नाम को रजिस्टर करवा देगी। ऑलराइट। तो दीक्षा, अगर कोई भी स्टूडेंट आपके पास आता है कि दे आर नॉट रजिस्टर्ड, तो आप उनकी नेम से ईमेल आईडी प्लीज शेयर कर देना हमारे साथ। एंड आशीष, आप कह रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड है पहले, तो आप क्या पता किसी और ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड हो, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। और अगर आप नहीं अभी आ रहा तो आप दोबारा ईमेल आईडी शेयर कर दो, आपको दोबारा रजिस्टर कर देंगे, ठीक, कोई इशू नहीं है। एनी अदर स्टूडेंट हैव एनी क्वेरीज? So thank you so much, student, for your time, and we wish you all the best for your careers. So Rashika, you can wrap up this call now. Okay, thank you so much. Thank you, Rohit sir. Thank you, students. Thank you, everyone, for being so patient and for being this interactive for the whole session. किसी को अगर कोई और डाउट्स हो या कुछ भी हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, आप लोग दीक्षा और हार्दिक को रीच आउट कर सकते हैं. They are your campus ambassador. They can very well reach out to us whenever required. Thank you, ma'am. Ma'am, now I would like to request the students to open their camera for group photo. Okay, sure. Students, we would just request if you could please open your cameras. Me and Rohit sir will also open their cameras for a group photograph. Everyone, I would again request to please open your cameras. Done, ma'am. And Okay. students, now I'm sending a link in the chat box so that you can give your attendance for the certificate purpose. As Avni said, students, please do go to that link and put your attendance. And again, as mentioned, thank you so much, everyone, for being this patient and interactive for the entire session. And we will wish you all the best. And we would actually request if you could please all do courses on IBM Skills Builder. It is actually good. It will help you all to gain your knowledge and your skills. You can do as many courses as you want. You can do
whichever course you want to do. It's not कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप मैनेजमेंट के कोर्स नहीं कर सकते हैं, या अगर आप कोई मैनेजमेंट के कोर्स स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स के कोर्स नहीं कर सकते हैं. आप जो चाहे वो कोर्सेज कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इसलिए go ahead, do as many courses as you feel like. There's no time or course limitations or restrictions, right? All the best everyone. Please आपने ने जो लिंक शेयर करा है आप उसको fill on कर दीजिएगा. Ma'am, I am requesting Nitya ma'am for vote of thanks. Okay, sure. Yeah, hello everyone. I am Nitya, overall placement coordinator here at Training and Placement Cell. And on the behalf of Training and Placement Cell, I am glad to express my vote of thanks to CSR Box and IBM Skills Builder platform for such a worthy job readiness program. And special thanks to Ms. Rashika and Mr. Rohit for making the online workshop interesting, because it is really very difficult to make the session very interactive. And special thanks to CSR Box team for being here, and thanks to all the students for joining, and all the very best to everyone. Thank you. Thank you so much, Nitya ma'am. Thank you so much. I would also like to thank the whole team, the training placement cell team, for being so supportive to us. I mean, जब offline sessions हो या online, Miss Monica, Hardik, Diksha, they all have been there to us to support every time. And we, for that matter, also again, thank you so much, everyone. So with this, we would actually like to wrap up this call. You all can now go and enjoy your weekend. Thank